Jai Jagannath, friends, this is Vasudev Panda. Welcome to Master English. Play English. The development of polio vaccine duty selection ଆମେ पैसेज आज आलोचना କରିବା এই ସେସନରେ ତ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛେ ଫଟାଫଟ ଜଏନ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବା ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ବି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆମେ ମାନେ कीवर्ड टाइप କରିବା 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବେ 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତ कीवर्ड ଆମେ टाइप କଲେ ବି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର कीवर्ड ଠିକ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର को एक्सेप्ट करबी ओके तो सीधा जीवा देखिबा कोन रही प्रश्न गुड़िक प्रथम प्रश्न होची व्हेन डिड आउटब्रेक्स ऑफ पोलियोमाइलिटिस प्लेग अमेरिका फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिड आउटब्रेक्स ऑफ पोलियोमाइलिटिस प्लेग अमेरिका क्वेश्चन नंबर 2 when did Roosevelt find out that he was a victim of polio क्वेश्चन नंबर 3 why did he take a cold swim काहे की गाधौतले क्वेश्चन नंबर 4 how was Roosevelt lunging at home केमती से रेस्ट नौथिले and question number 5 what are the early symptoms of polio attack throw light on the early symptom of polio attack ये होची क्वेश्चन पिले पांचटा क्वेश्चन ओके प्रथम प्रश्न होची when did outbreaks of poliomyelitis plague america अमेरिका केबे पोलियो ग्रस्त हेतिला अमेरिका को पोलियो केबे निज कब्जा रे रखिथिला ये होची प्रथम प्रश्न तो उत्तर केमती लिखिबा बेले इन 1921 outbreaks of poliomyelitis plagued America. ये उत्तर तो एठी ही कंप्लीट है जीव दिगरे इन 1921 outbreaks of poliomyelitis plagued America. तो आमे जदी चाहिबा ऐड करि परिबा it could be seen that the disease can strike instantly as the virus enter the body through nose or mouth and travel to the intestine. तो फर्स्ट गोटे लाइन रे ही सेंटेंस सरी जाउची क्वेश्चन नंबर 2 when did Roosevelt find out that he was a victim of polio केतल जानिबा को पाइले जे तांको पोलियो हिची बोली नहीं केतल तो on a tiring day Roosevelt took a cold swim for relief and lay leisurely in a swimsuit माने ठंडा पानी रे गाधे सारला परे से जेतबेले रेस्ट नौचंती when he went to bed जेतबेले से सोइबा पे बाहर ले he felt as if he had caught a cold and in a few days he found out that he had polio किछि दिन भीतर से जानिबा को पाइले जे तांको पोलियो हिची क्वेश्चन नंबर 3 why did he take a cold swim नहीं यार उत्तर भी बहुत सहज he took a cold swim for relief simple उत्तर शेष हो जाउची और you can add he take a cold swim for relief after a tiring day fighting a local forest fire एमती हमें लिखि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची मिस महापात्र he took a cold swim for a tiring day fighting a local forest fire in summer yeah next question रहला कोन पिले क्वेश्चन होची how was Roosevelt lunging at home ओ सहज प्रश्न how was Roosevelt lunging at home so कौन भापिले Roosevelt was lunging at home in his wet swimsuit ये होची उत्तर Roosevelt was lunging at home in his wet swimsuit simple एति की लिखिले हम 2 मार्क पाई भाबिले ओके तापरे हम जदी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा थ्रो लाइट ऑन द अर्ली सिम्पटम ऑफ पोलियो कोन कोन पिले हैं polio had flu-like symptom. Polio has flu-like symptom. नहीं lunging at home, Miss Mahapatra. अच्छा तो more question से डन more question थिला what are the early symptom of polio? So polio the early symptom of polio attack are flu-like symptoms, nausea, vomiting, headache, fever, etc. Yes or no? So polio had flu-like symptom, or you can say the early symptom of polio are nausea, vomiting, headache, and fever. That much headache, nausea, vomiting, and fever. Yes. तो नेक्स्ट देखिबा पिले नेक्स्ट आउ गोटे पेशेंट देखिबा जेमती आउ गोटे पेशेंट तो न आउ किछि क्वेश्चन सेही भितरो जदि हम देखि परिबा which things are carriers of polio virus which things are how
can polio spread? Which things are carriers of polio virus? How can polio spread? सही पैसेज दरू जो पैसेज वर्तमान आलोचना सही पैसेज आउ किछि प्रश्न हम आलोचना करिया ओके सो कौन हम पे which things are the carriers of polio virus? Food, water and air. Tapaswi Naik, very good. Food, water and air are the carriers of polio virus. Or how can polio spread? Polio virus can spread through physical contact with infected faces. Very lekaichi. Polio can spread through infected faces. Okay, direct contact with the infected faces through infected droplets traveling through air, in food or in water. Yes or no? Next question is, what percentage of people attacked by polio virus usually suffer from severe polio? Kete percent लोग? Simple 1% of people. नहीं केते परसेंट लोग को होतला पोलियो सीवियर फॉर्म ऑफ पोलियो पैरालिटिक अटैक जो होतला केते परसेंट लोग होतला 1% ऑफ पीपल 1% बहिर लिखा छै 1% ऑफ पीपल अटैक बाय पोलियो नहीं सीवियर फॉर्म ऑफ पोलियो क्वेश्चन नंबर 3 रोजी कोन थ्रू व्हिच ऑर्गन डज द पोलियो वायरस एंटर द बॉडी थ्रू व्हिच ऑर्गन डज द पोलियो वायरस एंटर द बॉडी को माने इंद्रिय देखि हमर बड़ी भितर को प्रवेश करे नोज और माउथ कीवर्ड कहां हो नोज और माउथ पोलियो एंटर्स आवर बॉडी थ्रू नोज और माउथ नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा बेले नेक्स्ट क्वेश्चन कोन नेक्स्ट क्वेश्चन होची एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस व्हेन द वायरस एंटर द ब्लड स्ट्रीम व्हाट हैपेंस when the virus enters the bloodstream को बोला मिस महापात्र nose or mouth and travels to intestine very good next question हो जो what happens when the virus enters the bloodstream को जब प्रवेश करे कौन हुए पहले when the virus enters the bloodstream the patient starts making antibodies against it the patient start making antibodies against it patient भीतर antibody तैयारी हुए लड़े ही चले आम देह जो देह सुरक्षा करने जो एंटीबॉडी सब था भीतर लड़ाई चले एंड इन मोस्ट केसेस प्रोग्रेशन ऑफ द वायरस इज स्टॉप्ड एंड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज इज एक्वायर्ड मैक्सिमम केसेस रे नहीं मैक्सिमम केसेस रे कोन हुए मेकिंग एंटीबॉडीज में इसमें बतला प्रेसिडेंट यस मेकिंग एंटीबॉडी तो ए समय ही एंटीबॉडी तैयारी हो जाए तापर हमर प्रोग्रेशन दा पोलियो प्रोग्रेशन बंद हो जाए ओके ये थिला तमरो फर्स्ट पैसेज रु किछि क्वेश्चन आ गोटे क्वेश्चन व्हाट इज पोलियोमाइलिटिस गोटे क्वेश्चन में भी हेई पारे व्हाट इज पोलियोमाइलिटिस मींस एन इन्फेक्शन बाय इन्फेक्टेड वायरल डिजीज ओके पोलियोमाइलिटिस कोन a viral disease poliomyelitis is a viral disease that infects the central nervous system CNS जाको हम कहू छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले पोलियोमाइलिटिस मींस एन इन्फेक्शन वायरल डिजीज दैट अफेक्ट्स ओके नेक्स्ट आमे देखो जे व्हाट लाइट डज द एक्सट्रैक्ट थ्रू ऑन रूजवेल्ट हमर सेकंड यूनिट रो फर्स्ट जो ये रहिला सेठू आरंभ होची पैसेज हम कहि दोज तुमको पैसेज रहिला रूजवेल्ट वाज डिटरमाइंड नॉट टू लेट दिस मिजरेबल गेट द बेस्ट ऑफ हिम एठू आरंभ होई गिरे व्हाई कुड नॉट अ वैक्सीन बी फाउंड पर्यंत अछि द यूनिट 2 रो ओके सो एठी प्रथम क्वेश्चन हला व्हाट लाइट डज द एक्सट्रैक्ट थ्रू ऑन रूजवेल्ट का ऊपर रूजवेल्ट का विषय रे कोन ए एक्सट्रैक्ट में कोन जानू छी क्वेश्चन नंबर 2 जो व्हाट आर द हाईएस्ट पोजीशन डिड रूजवेल्ट अचीव इन हिज पॉलिटिकल करियर तंका राजनीतिक करियर रे को हाईएस्ट पोजीशन को जाइतिले हाउ डिड रूजवेल्ट लीड द फाइट अगेंस्ट पोलियो अगेंस्ट फाइट की बड़ी करथिले क्वेश्चन नंबर 4 होची व्हाई वाज पोलियो फ्रैटनिंग कंटेजियस डिजीज पोलियो काहे के गोटा डरावना आ अत्यंत संक्रामक रोग बोली कहा जाय क्वेश्चन नंबर 5 दरा थ्रो लाइट ऑन द नेचर ऑफ दिस डेंजरस डिजीज ए रोगोर प्रकृति ऊपर माने कोन दृष्टिपात करो यार आउ पांचटा क्वेश्चन अछि बिले आउ पांचटा क्वेश्चन होची व्हाई वाज इट इम्पॉसिबल एट टाइम टू पुट पोलियो इन चेक डिस्पाइट एडवांस इन मेडिसिन एते एडवांस करथिबा सत्वे पोलियो को काहे के चेक करा जाई परनते आ गोटे क्वेश्चन हैला व्हाट आर द टेरिफाइंग आउटब्रेक्स दैट सीम्ड इम्पॉसिबल टू स्टॉप माने एते व्यापी जाउतला जे एटा काहे के असंभव लागुतला स्टॉप माने बंद करियो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हो जो व्हाट डिड द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी विटनेस 19th सेंचुरी रो फर्स्ट हाफ रे कोन कोन सब हमकु देखिबा को मिलुथिला
तापर रहा व्हाट मेड द पीपल एक्सपेक्ट साउंड हेल्थ इंस्टेड ऑफ merely होपिंग फॉर इट कहीं लोक माने गुड हेल्थ एक्सपेक्ट करुले आशा करने अपेक्षा एक्सपेक्ट कहीं करुले व्हाट हैपेंड इन अर्ली 1915 1950 मसीहार मध्य भाग में कौन होता ये जो 10टा क्वेश्चन ए पैसेज रु निया जायछि ए पैसेज रो ए 10टा क्वेश्चन वर्तमान आलोचना करबा तो प्रथम क्वेश्चन हो जे व्हाट लाइट डज द एक्सपेक्ट शो ऑन रूजवेल्ट के विषय रे ए पैसेज रु हमें कौन जानते नहीं मिले तो आमे समस्त पढ़ी थिबा रूजवेल्ट had a spectacular political career. He became the president of the USA America. He was relentless crusader against polio. Miss Mahapatra. Very good, very good, very good, very good. मिस महापात्र एबीसी सैंपल पेपर को पूरा प्रिंट कर देलो रे मां वेरी गुड बढ़िया बढ़िया सो रूजवेल्ट had a spectacular career. Roosevelt had a spectacular career. He became the president of America twice. He became the president of America twice. ये दुई तरह हे थिले बोले नेक्स्ट क्वेश्चन होची question number 2 what was the highest position did Roosevelt achieve in his political career he became the president of America this is the highest position he had achieved next question hochi question number 3 kon thila how did Roosevelt lead the fight against polio how did he spearhead awareness among people and promote research he spearheaded what awareness among people and promoted research like this he helped the people next question hoji why was polio how did Roosevelt why was polio a frightening contagious disease nahi why was polio a frightening contagious disease polio was a frightening contagious disease because it did not differentiate poor and rich and children are the most vulnerable बुझला या पाखे धनी गरीब रो भेदभाव नथिला आ पिला मानकु बेसी माने कोन करतला अटैक करतला poor and rich next question देखियो हमें throw light on the nature of this dangerous disease so polio was a fearful highly contagious disease yes or no so polio was a fearful highly contagious disease and it was unstoppable though the medicine had been advanced though the medicine and research had been advanced at that time it looks like it was impossible to stop the spread of polio next question देखिबा why was it impossible at times to put polio in check despite of advance in medicine काहे के पिले माने मेडिसिन रा एते एडवांस रिसर्च एते एडवांस कला सत्वे याकू काहे के चेक करा जाऊ नथिला आ लोक माने एते डरुथिले काहे के because it was a highly contagious disease the reason was because it was a highly contagious disease and there was not at all any medicine that can check it and it has no distinction with poor and rich धनी गरीब कहा को भी देखु नथिला ये नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट वर द टेरिफाइंग आउटब्रेक दैट सीम्ड इम्पॉसिबल टू स्टॉप सो एटी गोटे कंपैरिजन हेची प्लेग और इन्फ्लुएंजा अदर रोग माने अलगा रोग मानक सहित एटी गोटे कंपैरिजन कराइछि though polio had no devastating effects like plague or influenza still कौन होतला पिले it was attacking both poor and rich धनी और गरीब मानकु कौन करथिला अटैक करूथिला and children were the most vulnerable पिला माने छुआ माने या माने रोगर कब्जा भितर को बहुत जल्दी आसुतले highly contagious disease तपस्विनी कहला yes बेटा highly contagious disease so आ गोटे क्वेश्चन दिला what happened in early 1950 1950 मसिया बेलकू कोन होतला what happens in 1950 in early 1950
तो से समय कौन होता है हमर स्टांजार लास्ट रे पूरा अच्छे पिले लास्ट पैराग्राफ रे बुझियला ए समय कौन होता you can see the poster where the children are carrying the cumbersome mechanical adds iron lungs, which was, student, children are on crutches and iron lungs, which was very frightening. And parents, they were very afraid that they were not allowing their children to school or other, public activities. ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଜନ୍ମାରୁ ଛାଡୁ ନଥିଲେ ପବ୍ଲିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଛାଡୁ ନଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଛାଡୁ ନଥିଲେ and everybody was in panic condition. Yes or no? Everybody was in panic condition. तो ये थिला हमर दुईटा पोलियो वैक्सीन रो पाखा पाखी 20 टा प्रश्न हम रचना कले दुईटा पैसेज इंपोर्टेंट पैसेज आसंता परीक्षा पे नेक्स्ट क्लास हे 5:15 बेलू क्लास हबो क्लास वर्तमान कंटिन्यू चलिबो आ माने 10 मिनिट्स गैप रे चलिबो तो नेक्स्ट क्लास अच्छी आज सोशियोलॉजी पिलांका पई सोशियोलॉजी बहुत पिला कहउतले सोशियोलॉजी नेक्स्ट क्लास हबो सोशियोलॉजी क्लास ओके आ सोशियोलॉजी परे इकोनॉमिक्स हबो ओके नेक्स्ट क्लास होची सोशियोलॉजी आ तापरे होची इकोनॉमिक्स सो सी यू देयर स्टेट मास्टर इंग्लिश जय जगन्नाथ।